until I do. Okay. I think Ashwin was also getting the same error. Yes. So when these are uncommented, we run it again like this. Have you migrated? Yes. Means at the time you migrated, then there is error, or after migration this error is Oh, coming? while I was doing the get part in the Swagger, it was the error was. No, no, get part that is fine. But when you return that line, 29 number line, when you return, when you created add migration of label, at that time you have written, or after Yes, migration you yes. have written? Before migration. Before migration. Yeah, At the this was same done. time you migrated also, na? Yeah, this was done in class yesterday. No, class history, that means it was working, no? You Yes, see. but Then I will tell you the problem. So all get methods with include part will have this error because it cycles. but Then yesterday you saw, na, the error was not there. so yesterday what we did was we included first and we commented out this part, the list part from the model classes. Then we executed and it was successful. Then we later added the list and we didn't try the get uh, APIs. Later, when we tried the get APIs with the list part, it was showing this error. So there are two solutions. Either we can remove the list parts from the both of the model classes, or we can add a service, which is something that ignores the cycle part. No, no, nothing like that. Go to your code first. Yes. This is RL, na? Go to RL. And for level, why you not use authorized user? I think you said yesterday that for level we are not using authorize. Who said? You, I said. At what time, yeah, I said. I think maybe I misheard. Yes, others. I said. For level, you don't use authorized. I don't Well, remember. Okay, then I misheard. No. I will add. I said after users, whatever you do, anything, you need the authorization must. Okay. अरे रियल टाइम में गूगल की एपीआई में तो देखो ना, लॉग इन करोगे तभी जाके तो कुछ करोगे नोट, Yes. और Next. लॉग इन ही नहीं करोगे तो नोट कैसे ऐड करोगे, नोट ऐड नहीं करोगे तो लेवल कैसे ऐड करोगे? सिंपल कॉमन सेंस. Yes. Yes. Okay. So everywhere you need the user authorization. यूजर कंट्रोलर के बाद जितना भी कंट्रोल लिखोगे इस प्रोजेक्ट में, ऑथोराइजेशन नीडेड ही नीडेड है. Okay. उससे ऑथोराइजेशन लेवल क्रिएट नहीं होगा, नोट क्रिएट नहीं होगा, कोलैबोरेटिव क्रिएट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. अगर तुम कर सकते तो कर सकते, बट वो इनकरेक्ट है अगर तुम उस टाइप के लॉजिक लिखोगे तो. Okay. रन हो I'll, जाएगा बट वो करेक्ट नहीं है लॉजिकली. I'll fix it. है.
Yes. एंड सी सी तुम क्या कर रहे हो, रिटर्न लिस्ट कर रहे हो उसको यार, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? List I made this. गेटल में क्या कर रहे हो? तो सर, Yes. अगर तुम यूजर आईडी ले रहे हो तो उसको मैच तो करो पहले। मैच नहीं कर रहे हो, फिर डायरेक्टली लिख रहे हो रिटर्न 10, तो यूजर आईडी लेने का Uh, क्या मीनिंग हुआ? Line number 69, I guess. Yeah. ट्राई ब्लॉक के बाद yes. तुम लिस्ट लेने का कुछ मीनिंग ही नहीं है, उसमें कुछ Oh, जरूरत नहीं actually, है। I was doing for get also all of the notes I wanted to give. नहीं नहीं, लिस्ट Yes, वो लिस्ट की बात नहीं कर रही हाँ, हूँ मैं, तुम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हो ना 68 हाँ मैं नंबर गलती लाइन समझ में। गया हूँ। गलती हाँ, समझ उसमें गया हूँ, मैं जरूरत यूजर आईडी ले है। तो रहा हूँ पर कहीं यूज नहीं कर रहा हूँ। हाँ एक सही। ऑब्जेक्ट लेके उसको पहले मैच करोगे, यूजर आईडी एग्जिस्टेड है क्या, है तो नेक्स्ट लाइन में आओगे रिटर्न करोगे। ठीक है। एंड हाँ वो ये पार्ट जो तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सब रिटर्न करो, ये पार्ट कंट्रोलर पार्ट में चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। लॉजिक ही गलत है, इसलिए एरर आ रहा है ये। नहीं, ये लॉजिक वैसे काम कर रहा है अगर मैं उसको कमेंट कर दूं तो। ना कमेंट तो सी, अगर वहां पे एरर दिखा रहा है तो तुम एक काम कर सकते हो, दो इंक्लूड लिख दो ना, यू एरोमा क्यू डॉट लेबल भी दिखा दो यहाँ पे। ये कौन सा एपीआई, तुम्हारा नोट एपीआई है ना, क्या? हाँ ये नोट है। तो लेबल तो दिखा दो, एरर नहीं आएगा। एक इंक्लूड में यू डॉट यूजर और एक लिखो डॉट ठीक। इंक्लूड, हाँ, एल एल एरोमा केल डॉट लेवल, तो लेवल का भी डिटेल्स दिखा देगा। पर आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि जब हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं और फिर मैं नोट में जाता हूँ तो यहाँ पर एक यूजर वाला ये भी है। तुम पहले लिखो, फिर डिबग करो, फिर मुझे ठीक दिखाओ। ठीक। अब इसको क्या होगा पता है अंकित, इसको यूजर आईडी नहीं मिलेगा, ये पूरा घूमता जाएगा, साइकिल साइकिल तरह घूमता घूमता जाएगा, फिर क्या करेगा, अभी उसको आके एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो उसको यूजर आईडी नहीं मिलेगा। सब यूजर को चेक करेगा एक बार एक करके। ठीक है, ठीक है, तुम डिबग करो, पता चल जाएगा कहाँ पर इशू। अगर तुम कुछ नहीं ले रहे हो देन ये कोड ठीक है, अगर तुम यूजर आईडी पास करे तो उसका कुछ मीनिंग ही नहीं रहा लेने का। तो ऑथराइज कर रहे हैं ना, तो ऑथराइज के तो यूजर आईडी मस्ट नीडेड है। तुम्हारा ऑथराइज क्यों नहीं कर रहे हो सर? ऑथराइज किया। हाँ, अच्छा किया है। यस। डिबग करो ना, हाँ एंड कंट्रोलर में ऑथराइज लिखो गेट नोट के ऊपर। हाँ। डिबग यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट डालो, वहाँ कंट्रोलर में ब्रेक पॉइंट डालो, डिबग करो। बट तुम आरएल में लॉजिक ही नहीं लिख रहे हो यूजर आईडी का। अभी ऐड कर दूं? ठीक है, तुम चेक कर लो, एक बार डिबग कर लो, तुम्हारा भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, क्यों यूजर आईडी लेना है, क्यों चेक करना है। करो एक। ठीक है, नेक्स्ट। अभी यूजर आईडी कौन सा आ रहा है चेक करो, कवर करो उसको, नेक्स्ट लाइन में 1 आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट। अभी लिस्ट के ऊपर होवर करो।
लिस्ट के तो अभी ऊपर, पहले यूजर के क्या ऊपर, लेवल के ऊपर, सब में होवर करो। हाँ, वहाँ तो क्या आ रहा था लिस्ट में? मैं ये इसे चेक कर रहा था। नेक्स्ट। अभी फिर से आया ना यहाँ पर? क्या आ रहा है अभी? होवर करो उसके ऊपर, लिस्ट के ऊपर, काउंट टू आ रहा है। बट तुम यूजर आईडी, अच्छा यूजर आईडी 1 का 2 है क्या? 2 नोट्स है क्या? हाँ, ठीक है। एक्चुअली मैंने अभी दूसरे यूजर आईडी में नोट्स डाले नहीं है, इसलिए सिर्फ 1 के ही आ रहे हैं। अगर दूसरे में भी डाले होते तो उसके भी सारे नोट्स आ जाते हैं। नहीं, यूजर आईडी 1 का 2 नोट है क्या? हाँ, ठीक है, नेक्स्ट करो। ये टैक्सेशन नहीं आ रहा है अभी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। प्रिंट हो रहा है। परसेप्शन है। This can either be due to cyclical if object depth is larger than the maximum allowed depth of 32. एक बार तुम्हारा डाटाबेस में जाओगे। जब तक ये खुल रहा है तब तक मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या किया था जिसकी वजह से हो गया था। This is not the solution to sir. हाँ मतलब कल जो ईएफ को डॉक्यूमेंटेशन डेट करते हैं उसमें भी तुम लोग अगर नोटिस किए होगे तो एक जहाँ पे फॉरेन की करे वहां पे पब्लिक वर्चुअल करके दूसरे एंटिटी का नाम दे रहे, एंड अनदर एंटिटी में हम लोग आई लिस्ट या आई कलेक्शन करके लिख दे। तो इसमें कुछ इशू नहीं है, बट यहाँ पे यूजर आईडी क्या हो रहा है पता है? यहाँ पे तुम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं करना, आई थिंक यहाँ पे डिस्प्ले करना था ना। ऑब्जेक्ट क्रिएट क्यों कर रहे हो वहां पे आरएल में? ठीक है, अभी देखो, गेट नो, कंटिन्यू। तो यूजर आईडी 1, स्क्रॉल डाउन, इंक्लूड भी यूजर आ रहा है। आईडी, यूजर आईडी 1। फिर दूसरा नोट। ठीक है, आरएल आरएल में जाओ। आरएल में इस मेथड में लिखो, एक ऑब्जेक्ट लो, पहले उसको चेक करो यूजर आईडी। जैसे पहले, हाँ, नीचे वाले को वो कॉपी कर दो, 82 लाइन नंबर लाइन में हाँ जाओ। वो तो मैं नोट आईडी को हटाओ। इसको क्या एपीआई लिखोगे? गेट नोट बाय यूजर आईडी। एंड और एक एपीआई क्या बनोगे? गेट नोट बाय नोट आईडी। तब नोट आईडी भी पास करना होगा। अभी यहाँ पे ठीक। ओनली यूजर आईडी लिखो। इफ नॉट इक्वल नॉट नल, देन नॉट नल लिखो। नॉट इज नॉट इक्वल टू नल, ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट। नहीं नहीं, ब्रैकेट हाँ ब्रैकेट। अंदर ही हो गया। लिखो, नो 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 नो, उसको मत, नहीं नहीं, लिखो रिटर्न अवॉइड पंडू डॉट नोट डॉट। फिर अदरवाइज तुम एक और एक भी चीज लिख सकते थे, इसको भी नहीं लिख कर, मतलब वो उसको डायरेक्टली तुम लिख सकते हैं रिटर्न अवॉइड
फंड डॉट नोड वेयर यूजर आईडी इक्वल इक्वल यूजर आईडी, वो लिखना भी जरूरत नहीं 868 वाला लाइन, उसको सबको हम्म, हटाओ या सबको पूरा डिलीट करो, सबको 68 से लेकर 75 तक सबको हटाओ, ट्राई के अंदर जितना भी सबको डिलीट करो। साइन को रख देते हैं। नहीं तो तुम कमेंट कर दो अगर तुम्हारा, हाँ ठीक है, उसको कट कॉपी कर कट ले। करो। हाँ, देखो पहले रिटर्न लिखो, उसके पहले रिटर्न एवेट फंड डॉट नोड डॉट वेयर लैम्डा एक्सप्रेशन वेयर डबल कैपिटल हाँ, वेयर operand close curly bracket, एक prefix लो dot user id equal to that user id, then include this, then और एक level, then to list करो, और एक include मतलब लिखो, next line करो, मतलब इंक्लूड एंटर कर दो, हाँ नहीं नहीं मतलब इन यू एरो मार्क यू डॉट यूजर के बाद और एक इंक्लूड मेथड लिखो लेवल के लिए, एल एरो मार्क अच्छा एल लेवल डॉट, के लिए। हाँ लेवल के ठीक लिए, है। लेवल डिस्प्ले भी करना है। लेवल तुम्हारा कुछ है यूजर आईडी 1 का, नहीं होगा तो फिर कंफ्लिक्ट हो जाएगा। एक है अभी, अभी खुल गया ना, उसको चेक कर। लेवल आईडी यूजर आईडी 1 के लिए है। ठीक है, कर रहे हैं। उसको अनकमेंट कर, हाँ क्लीन सोल्यूशन करो फिर चेक करो, क्लीन बिल्ड कर उसमें भी एरर है। डॉट एल कैपिटल है,
still the same. ओ एरर को कॉपी करो यार, कॉपी करके पेस्ट करो। मैं वैसे कल चेक कर चुका हूँ गूगल पे, तभी हाँ, उसका कुछ सर्विस वाला सॉल्यूशन है ना, हाँ, सर्विस में ऐड करना है। या तो सर्विस में ऐड कर सकते हैं अगर वो रखना है तो, या फिर सेम एरर है इसकी, और ये सॉल्यूशन में पता है किसी सर्विस ऐड। ओके 1 सेकंड। आई एम सेंडिंग इन चैट, उसको कॉपी पेस्ट करो यार एंड स्टार्टअप में डालो। एंड इसके लिए आई थिंक तुम लोगों को पैकेज एक इंस्टॉल करना होगा। न्यूटन सॉफ्ट। ये सर। ASP.NET Core.MVC, पहले उसको डालो, चेक करो वो आ रहा क्या वर्क करके। नहीं, किसके अंदर डाल रहे हो? हाँ, स्टार्टअप। बाहर ही डालो। हाँ हाँ, अभी होवर करो उसको। नहीं, उसको स्टार्टिंग में डालो ना, स्टार्टिंग में डालो जहाँ पर सर्विस डॉट एड कंट्रोल लिखा है उसके नीचे, या 38 नंबर होवर करो उसको। तो जाओ, नहीं दिख रहा है, नहीं दिखा रहा है तो इंस्टॉल करना पड़ेगा पैकेज सेंडिंग इन चार्ट। उसको कॉपी पेस्ट करो। 3.1.1 वर्जन, ओके 3.1.11, that one। रिपोजिटरी। नहीं नहीं, रेपोजिटरी नहीं, फंडू फंडू करो, रेपोजिटरी काटो। स्टार्टअप में हम लोग कर रहे हैं ना, तो कंट्रोलर का इशू दिखा रहा है ना, कंट्रोलर में कुछ यस। नहीं हो रहा है तो कंट्रोलर डिलीट करो। 3.1.11 करो। क्यों 3 पॉइंट ले रहे हैं? क्योंकि हमारा वर्जन हम लोग 3.1 सिमिलर, उसको हाँ, सिमिलर। उसका हाईएस्ट वर्जन में ले सकते हैं, बट 4 से ज्यादा लोगे तो मैं भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी एडेड है उसमें, तो कुछ क्या एरर आया चेक करो क्या करना। अभी check- आ गया। अभी बिल्ड करके एक बार फिर से चेक करो। वो क्यों ले रहे हैं आई लिस्ट करके? क्योंकि यूजर गेट यूजर में भी हम लोग लेवल दिखा सकते हैं, इसलिए वो बहुत हो गया साइक्ल डिपेंड, बिकॉज यूजर भी डिपेंड हो गया लेवल के ऊपर, लेवल भी डिपेंड हो गया किसके ऊपर, हाँ, वो यूजर के ऊपर। एक दूसरे को इसलिए रन मैनी करते टू जा रहे मैनी हैं। है। हाँ, वो क्या? एक दूसरे को रन करते जा रहे हैं बार बार। इसलिए ये मैनी टू मैनी है, मतलब बोथ आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। प्रीवियस क्या हो रहा था, नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन द यूजर, यस। बट ये मैनी टू मैनी है, दो फॉरेन की है। उसको नहीं भी ले सकते हो, अगर डिस्प्ले नहीं करना है यूजर में लेवल तो उसको हटा भी सकते हो। फिर भी जितना करोगे, जितना मतलब एरर्स आए उसको रिजल्व करो, उतना ही तुम्हारा ग्रोथ होगा। तो चेक करो ये क्या आ रहा है, नहीं होगा तो डिलीट कर देंगे। क्योंकि ये तो मैं भी यूज की थी, मेरा भी काम कर रहा था। आई थिंक इट विल वर्क, चेक करो एक बार। इसमें बहुत सारे एरर आ गए जिसको तो सब बोलना भी मतलब पॉसिबल नहीं। तुम खुद से करोगे तो एक एक डिफरेंट टाइप के एरर है, तो उसको रिजोल्व करने का मेनी वेज होगा, ठीक है। तो
देखना पड़ेगा। इसके बाद भी बहुत सारा है, एमबीसी पैटर्न है, देन विंडो फॉर्म है। And in the ending of the session, I will tell each and every engineers what which company you are mapping with and which things you have to learn. Okay, in this backend also, and whatever you not learned and whatever you did not know about this, आ गया? Yes. ठीक है, congratulations. Okay, Yes. okay. तो और क्या इशू है? और क्या डाउट था? मुझे तो यही था बस। मैम आप कुछ बता रहे थे। हाँ, वो सेशन एंड के बाद बताऊंगी। तो सबका किस किस कंपनी में मैपिंग हुआ है, और अभी तक क्या मतलब कौन सा टॉपिक है, कौन सा रिक्वायरमेंट है कंपनी को, वो लास्ट में बता दूँ, ठीक है? ओके। यस। और किसका कुछ इशू है क्या? क्योंकि लेबल का तो ऐड, लेबल, अपडेट, डिलीट ये तो है। लेबल का मुझे थोड़ा दिखा हुआ है। लेवल अच्छा, लेवल तो हो रहा था तुम्हारा। गेट लेवल भी हो गया ना? यस, गेट लेवल वो हो गया, गेट उसमें नोट था वो। ऑथराइजेशन में ऐड कर दूंगा। ऑथराइजेशन मैंने कौन मिस कर। बोला अपडेट लेवल? क्या अंकित? आई थिंक यू, राइट? यस मैम। you written ना update level. या Okay, Tushar, can you stop presenting? Yeah, Ankit present. Apart from Ankit, anyone has done delete or update level? Yes, ma'am. Fire lever Yes, killer. ma'am. Working perfectly? डिलीट Yes, में ma'am. प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, अभी देख लेंगे अंकित में सिस्टम। ठीक है अंकित, प्रेजेंट करो। एक बार डिलीट दिखाओ, फिर पायल का सिस्टम में करेंगे, ठीक है? डिलीट नहीं किया मैम मैंने। नहीं नहीं, अपडेट दिखा दो ना, अपडेट हाँ हाँ दिखाओ। बस। ऐड तो हो गया, अपडेट देख लेंगे, फिर डिलीट का क्या इशू आ रहा है पायल का सिस्टम में देखेंगे। या क्योंकि जस्ट एक ही सिस्टम सबका करेंगे तो सबको भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है? एक अब गेट तो सब लोग समझ गए होंगे कैसे नोट में कर रहे थे, अभी सेम टू सेम लेवल में ही करना है, ठीक है? गेट लेवल, गेट लेवल में क्या दिखाना है तुषार? लेवल में तुम नोट का भी दिखा सकते हो, यूजर का भी दिखा सकते हो, ठीक है? इंक्लूड मेथड से। मेथड बनेंगे ना गेट में? क्या अंकिता? 2 मेथड बनाने पड़ेंगे ना, एक यूजर आईडी से, एक नोट से। हाँ हाँ, यूजर आईडी से, एक नोट आईडी से। गेट लेवल बाय यूजर आईडी तो मतलब क्या, ओनली यूजर आईडी पास करना है एंड उसको क्लेम करना है कंट्रोलर सेक्शन में। अगर नोट आईडी लोगे तो यूजर आईडी कॉमा नोट आईडी लोगे, एंड कंट्रोलर सेक्शन में यूजर आईडी को सेम जैसे कर रहे थे क्लेम हम लोग वैसे करेंगे, एंड नोट आईडी को सिर्फ पास करना है इन द यूआरएल एज ए पैरामीटर। उतना ही डिफरेंस, ठीक है? यस मैम। Yeah. एंड मैं और एक चीज बोलूंगी, अभी हम लोग जो इंक्लूड, वेयर, टू लिस्ट, टू फास्ट और डिफॉल्ट ये सब कर रहे हैं, ये तो हमारा लिंक क्यू क्वेरी का मेथड सब है, लिंक क्यू क्वेरी का सिंटैक्स है। बट इसके अलावा भी हम लोग और मतलब कर सकते हैं, दूसरा भी तरीका है, जॉइंस लेके भी हम लोग ये लिख सकते हैं। और वो दूसरा से क्वेरी है, मैं उसको भी बता दूंगी, ठीक है? Yes, ma'am. अगर डाउट सेशन में ज्वाइन करो तो मैं डाउट सेशन में तुमको बता दूंगी वो उसका भी यूज करके कैसे। पहले इसमें पूरा सब कुछ मतलब परफेक्टली वर्क कर रहा है, तब गिटहब में अपलोड कर दो। फिर बाद में और क्या क्या नेक्स्ट चीज ऑप्शनल थिंग दैट आल्सो आई विल टेल, ओके? यस एंड आज तो फ्राइडे है ना, ठीक है? सो ये लेबल एडेड है। ये मुझे रन करके डिबग करके दिखाओ अपडेट लेवल, ओके क्या लॉजिक लिखे हो। थोड़ा जूम इन करो। अच्छा, ये तो यूजर आईडी ले रहे हो, लेबल आईडी ले रहे हो, और क्या ले रहे हो? लेबल नेम। लेबल नेम। एक सेकंड, आई थिंक तुम्हारा प्रायोरिटी गलत है। आई थिंक सेकंड में तुम लेवल आईडी डाले थे आरएल में, चेक करो तो। हाँ सेकंड में तुम्हारा तो ये प्रायोरिटी वाइज तुम लोग को डालना पड़ा। अगर प्रायोरिटी वाइज फास्ट में तुम यूजर आईडी की जगह लेवल डाल दोगे तो एरर देगा, तो ये करेक्ट नहीं है अंकित, ठीक है? कंट्रोलर में यस चेंज करो एंड लेवल आईडी। सी आई थिंक यूजर आईडी तो ले रहे हो, ये काम कर रहा है, एक बार चेक करो। आई थिंक हाँ नोट काम आईडी नहीं ले रहे हो, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? काम कर रहा है मैम। ठीक है, देखो।
बीएल में कॉल करते टाइम स्विच कर दिया होगा मेरे ख्याल। सो ठीक है, रन करो। नहीं नहीं, पास करो ना, पास करो, पता चल जाएगा कहाँ पे इशू। हाँ हाँ बस डिबग पॉइंट डाले हो ना, लेबल आईडी थर्ड 3 में करो ना, 3 में करो, और कुछ डालो। ऑथराइज किया? हाँ किया। कोड में जाओ, उसको मिनिमाइज कर दो ना, सागर को कुछ। ये करेक्ट है। अच्छा, तुम पास कर रहे हो, यूजर आईडी यही है, लेवल आईडी है, तो लॉजिक ठीक है। अगर 49 में पास नहीं करते ना, तभी एरर दिखा हम्म, देता है। ठीक है, रिजल्ट डॉट, ओके, देन रिटर्न भी कर रहे हो, अच्छा ठीक। सी अंकित, वन थिंग, अगर यस रिटर्न में तुम कर रहे हो ना, रिटर्न वेयर कंडीशन, वहां पे भी तो और कुछ तुम जो पहले चेक कर रहे हो ना, उसका मीनिंग जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके क्योंकि उसमें भी वेयर कंडीशन डाल रहे हो, यहाँ पे भी वेयर कंडीशन डाल रहे हो। और एक क्या डाल सकते हो कंडीशन, जैसे तुम लेवल आईडी पास किए अभी 3, अगर 3 करके होगा ही नहीं, तो क्या करोगे? सॉरी, दिस लेवल डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या यस करोगे, कंडीशन कैसे डालोगे? कंट्रोलर में वो वाले जो कंडीशन लिखे थे ना, var means where user id equal to level id 10, so that you result, if that result equal to null, then क्या लिखोगे? रिटर्न दिस डॉट बैड रिक्वेस्ट, सॉरी लेवल डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज क्रिएट ए न्यू लेवल, ऐसे यस लिखोगे, ठीक है। अभी सागर में जाओ यार, सागर, सो क्या इट्स रेस्पॉन्स आ रहा है? हाँ क्या हेलो वाला आ रहा है ना? एक हाँ सेकंड, कैंसिल मत करो, उसको एक्सप्लेन करो सागर को। लेवल आईडी डालो, 11 डालो, कुछ भी और डालो जो नहीं है, अभी एग्जीक्यूट करो, कोड बन जाओ ना, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। एरर क्या मतलब, आंसर क्या आ रहा है? 4 अंडर आ रहा है, क्या आ रहा है? अपडेशन ऑफ लेबल फेल ये कहाँ पर डालो? ऑपरेशन लेवल पर लिख चुके हो क्या ऑलरेडी? हाँ लेवल कंट्रोलर में जाओ। उधर गया अच्छा, ऑलरेडी लिख चुके हो, देखो उसको दिया, यही मैं बोल रही थी, ठीक है, बट अपडेशन लेवल नहीं लिख कर क्या लिखोगे? हाँ ठीक है, अपडेशन लेवल भी लिख सकते हो, नहीं तो लेवल नहीं है, क्रिएट ए न्यू लेवल। यस ठीक है, तो ऐड लेवल तो हो गया, अपडेट भी हो गया, गेट लेवल तो तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है, गेट लेवल बाय यूजर आईडी, गेट लेवल बाय नोट आईडी, ठीक यस है। अभी अंकिता का देख देंगे डिलीट वाला क्या है इशू, ठीक है, ओके ये तुम्हारा लेवल वाला पूरा कंप्लीट हो गया। आई थिंक गेट लेवल बाय नोट आईडी यूजर आईडी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स लगेगा, अगर चाहोगे तो, ठीक है, यस 1 बजे से पहले हो जाएगा। मैं तुमको और एक भी बता दूंगी, अभी टाइम हुआ तो 9:30 के बाद, रेडिस कैसे कॉन्सेप्ट है, ओके फिर उसको भी इम्प्लीमेंट करना, तो कल तुम्हारा पूरा फाइनल रिव्यू ले लेंगे, पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या अंकिता, अंकिता और पायल, पायल आई थिंक प्रेजेंट स्क्रीन, पायल, यार फ्रेशिंग इशू ना डिलीट में, हाँ। Actually, I'm on visible now. Hello. या विजिबल, यस तो डिबग पॉइंट डालो डिलीट में, वन सेकंड, तुम
अच्छा वॉइड ले रहे हो क्या डाटा टाइप? अच्छा ठीक है। यस मैम। तो यूजर लेबल आईडी, यूजर आईडी को चेक कर रहे हो, फंडो कंटेंट्स लेवल रिमूव रिजल्ट। अच्छा ओके ठीक है, रन करो, देखते हैं क्या issue। राइज करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप करो। इसको तुम डिक्रिप्ट करना चाहिए ना, पूरा कॉपी ऐसे करने में थोड़ी ना होगा पायल। वो एक्चुअली मैंने ट्राई किया बट थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो मैं Then yesterday why you not asked the question without question? एक्चुअली कल किया तो मैं उसको मैं अंकित को आई थिंक बोली थी उसको एनी एवरी टाइम कुड नॉट कॉपी ना द पासवर्ड, गो टू द डाटाबेस यस एंड मैम। कॉपी दैट, इट इज नॉट पॉसिबल। यस मैम। यू हैव टू डिक्रिप्ट आई थिंक, राइट अंकित? Yeah, ma'am. डिक्रिप्ट करना है इसको लॉगिन में फिर से एनक्रिप्ट करना है। जब इंसर्ट करते हैं फिर इसको डिक्रिप्ट मतलब क्या है? एनक्रिप्ट मतलब उसको कुछ रैंडम 16 या 8 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, जब फिर से उसको डालना होता है। अगर तुम डालोगे मतलब पहले डाले थे हेलो, फिर वो कन्वर्ट हो गया कुछ 16 डिजिट में, अगेन जब उसको एक्सेस करना है फिर डालोगे हेलो तो काम नहीं करेगा ना, उसको फिर से पहले वाला पोजीशन में कन्वर्ट करना होगा, फिर जाके करोगे फेच करने के टाइम। फिर अपडेट और इंसर्ट के टाइम उसको एनक्रिप्ट ही करना पड़ेगा, बट गेट के टाइम स्टेप बाय स्टेप, कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप करो ना। हाँ होवर करो, लेबल आईडी एंड यूजर आईडी क्या आ रहा है? जी यूजर आईडी, यस मैम। यूजर आईडी क्या है? 3 है मैम। Oh, ये sorry, sorry. लेबल आईडी है 3। Yes, sir, yes, yes. नेक्स्ट करो ना, और एक नेक्स्ट करो, आ जाएगा। क्या हो गया? अभी होवर करो उस पे, यूजर आईडी भी 3 है क्या? Yes, ma'am. ठीक है नेक्स्ट करो। ठीक है नेक्स्ट, अभी रिजल्ट पे होवर करो, एक्सपेंड करो ना उसको। अरे वो एरो मार्क पे Yes, हाँ ma'am. Yes, ma'am. 3 तो है, अच्छा ठीक है। यूजर आईडी 3 है, नोट आईडी सब 3 है क्या? Yes, ma'am. अच्छा ओके नेक्स्ट करो, नेक्स्ट हाँ Yes, yes. स्टेप इनटू नेक्स्ट। कंट्रोलर में अच्छा ठीक है,
क्या हो रहा है? डिलीट हो गया? चेक करो क्या आ रहा है आंसर। यस मैसेज क्या आ रहा है? मैम, डिलीट सक्सेसफुल होता है, बट हम जब कोई देखो हो गया डाटा है। दूसरा, then we are using someone another ID, label ID. So डिलीट हो गया ना? yes मैम, डिलीट हो गया नहीं हो गया? कुछ हुआ मैम? अभी तो बोल रहे थे नहीं हो रहा है। नहीं, अगर हम दूसरी लेवल आईडी लेते हैं तो वो वहाँ पे मैसेज आना चाहिए, मतलब मैंने क्रिएट किया था कि दिस इज आई एंड वो मीन लेवल 1 करके क्यों आ रहा है? और एक दैट वन। हाँ ये क्यों आ रहा है? लेवल में चेक करो ना, कॉलम में, यस कॉलम्स। मैम, यस मैम, लेवल आईडी को भी फॉरेन की कर दी क्या? तीनों फॉरेन की? 1 सेकेंड। 3 फॉरेन की हो गया। लेवल आईडी प्राइमरी की है, लेवल 1 नोट आईडी है, यूजर आईडी है। ओके अभी इश्यू क्या है मुझे बताओ, प्रॉब्लम क्या आ रहा है डिलीट में? मैम, मतलब दूसरी कंडीशंस लगानी है, अगर लेवल आईडी नहीं है तो वहाँ पे मैसेज नहीं आ रहा, मैंने क्रिएट करके अभी देखा। डिलीट हो रहा है ना परफेक्टली? हाँ हाँ, डिलीट हो रहा है। यूजर आईडी 3 था, नोट आईडी 3 था, एंड लेवल आईडी भी 3 था। यस एक मैम, काम डिलीट करो, हो। फिर से और एक नोट क्रिएट करो, लेवल क्रिएट करो, फिर से क्रिएट करो। यस मैम, ठीक है, एक सेकंड, नोट आईडी नल क्यों आ रहा है? अभी तुम आई थिंक चेंज किए एंटिटी में, मैं जब बोल रही थी कुछ चेंज किए, आईडी को कैपिटल कर दिया थी। डी स्मॉल है, तुम डी को कैपिटल कर दिया अभी। नो मैम, कैपिटल नहीं। तुम्हारा टेबल में देखो ना, आईडी स्मॉल है, कंट्रोल जेड करो। ठीक है, यस मैम, तुम्हारा कोड है, तुमको पता नहीं डी स्मॉल है वो ये है, बट मुझे पता है। ठीक है, अभी चेक करो, फिर से और एक ऐड करो। यस यस मैम। ठीक है, अभी तुम यूजर आईडी 3 में जाके करोगे, नो एंड लेबल आईडी 5। ठीक है, करो, ओके, कागज में ही करो, यस मैम, डिलीट करो 5 को। यस कंटिन्यू।
कंटिन्यू कर दो ना. Yes. चेक करो. Just one minute. ओके. Yes. एंड अगर नहीं है तो एक कंडीशन डालो कंट्रोलर में. ठीक है, जैसे अभी मैं जस्ट बोली. Yes. तो वो एक बार रिजल्ट करके एक ऑब्जेक्ट ले लेना. फिर अगर वो इक्वल इक्वल नल है तो सॉरी, दिस लेवल Mm-hmm. इज नॉट एग्जिस्टेड, प्लीज क्रिएट ए न्यू लेवल फर्स्ट. ऐसे लिख दो. ठीक है, Yes. कंट्रोलर के अंदर लिखोगे. ठीक Yes. है, Yes. तो डिलीट हो गया, अपडेट हो गया तुम्हारा. एंड गेट तो तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो, तो इसमें कुछ इशू नहीं होगा आई थिंक. गेट लेवल बाय यूजर आईडी एक एपीआई, गेट लेवल बाय नोड आईडी एक एपीआई. ठीक है, Yes, ma'am. तो इसको कर दो. नेक्स्ट तुम्हारा कोलैबोरेटर है. कोलैबोरेटर में सेम कंसेप्ट है जैसे लेवल में था, बट कोलैबोरेटर आई थिंक नहीं करेंगे हम लोग. ठीक है, तो सेम में तो कुछ टाइम ही वेस्ट होगा, कुछ काम नहीं है. तो काम करो, एक फाइल और एक टैब ओपन करो, न्यू टैब. Yes. उसमें सर्च करो रेडिस कैसे इन डॉट नेट कोर वेब एपीआई. Ma'am, cat. That is. रेडिस, रेडिस REDISCACHE कैसे इन डॉट नेट कोर वेब एपीआई. Okay. Which one, ma'am? ये फर्स्ट वन ओपन करो ना. Yeah. फर्स्ट वन नहीं तो सेकंड वन. नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है. हाँ, स्टार्टिंग से पूरा रीड करो पहले. ये लिंक सेंड कर दो चैट में. सब Okay. लोग 5 मिनट पहले गॉन थ्रू करो, देन आई विल टेल. ओके. Yes, ma'am. Introduction. Caching is the process of storing copies of file or data in cache or temporary storage locations so that they can be accessed more quickly. It is a process of storing data or files in a temporary storage for a specific period, so that from the next time onwards, when the data is requested, it can be provided from this temporary storage instead of database or from original files. In this post, we will see how to install and use Redis Cache on Windows. We will create an ASP.NET 6.0 web API and use the Redis on Windows. We will also see how to create an Azure cache for Redis on Azure portal and use it with our application. Distributed caching. A distributed cache is a cache shared by multiple application servers. Distributed cache improves application performance and scalability because it can supply the same data to multiple servers consistently. And if one server restart or crashes or cache, data is still available to other server as normal. Distributed caching in ASP.NET Core 6.0. I distributed cache interface provides you with the following method to perform action on actual cache. Get, get asynchronous, get the value from the cache server based on the string key. This method accepts a key and retrieve a cache item as a byte array. Set, set asynchronous, accept a string key and value and set it to be cache server. These, these methods add an item as a byte array to the cache using a key. Refresh, asynchronize. Reset the sliding expiration timeout. This method are used to refresh an item in the cache based on its key, resetting its sliding expiration timeout. Remove synchronize. Remove the cache database on the string key. To use distributed cache in ASP.NET Core, we have multiple built-in and third-party implementation to choose from. Distributed SQL Server Cache to use SQL Server Distributed Cache, we need to use this package, Distributed Redis Cache.
To use distributed cache, we need to use this package. Distributed and cache. To use and cache distributed cache, we need to use this package. What is Redis cache? Redis is an open source BSD license. In memory data structure, store use as a database, cache message, broker, and streaming engine. Redis provides data structures such as string, hashes, list, set, sorted set, with range queries, bitmap, hyperlog, logs, geospatial indexes, and strings. Redis has built-in replication, lower scripting, LRU eviction, transactions, and various level of on-disk persistence and provide high availability via Redis, Sentinels, and automatic partitioning with Redis cluster. You can use Redis in many programming languages. It is such a popular and widely used cache that Microsoft Azure also provides its cloud-based version with the name Azure Cache for Redis. I that is the installation part. Project will be created after clicking the create button. HTML agility pack is used for web scripting and caching. Tag Exchange Redis is used for Redis caching. Two other libraries will be used for entity framework database operation. We must install the libraries below using Nugget package manager. HTML Agility Pack, Microsoft Entity Framework Core, SQL Server, Microsoft Entity Framework Core Tools, and Microsoft Extension Patching, Stack Exchange Redis, App Setting JSONs, connection string connect करना है database से. We can create a free class inside Okay, the okay. So, what you understood, yeah, from beginning up to what you did? What you understood? Anything? Can you tell? Anything you yes, understood? Hmm. caching is the storing copies of files. Uh, It means the temporary storage location. Actually, my voice is little. So in the previous also in computer subject also, Yes, if you read cache basically for speeding our RAM of the speed, for for purposing that we are using the cache. What is the Yes. yes, cache? Is that, and I think one question also there in your computer subject, by which or by what thing we can speed our computer's memory. So that the answer was cache. Okay, in the cache Yeah. memory, you cache. can speed up the your RAM size. Okay, RAM speed, and basically the temporary things we are storing in cache. Cache means basically this is a temporary memory storage. It's written as storing data or files in temporary storage. Yes, ma'am. Okay, and Yes, ma'am. distributed caching is a concept. So why this static cache we are using? Like it's coming to the concept of speed. Okay, speed. Speed mean in which second your API is executed. Okay, for testing purpose only, we are using this static cache concept. And for this, you have one concept that is distributed caching, and distributed caching is nothing but multiple application use servers. Okay, then yeah, it's written server started and also crashes at the same time. Cache data is still available or not, that you can see. It's connected to the database, then distributed cache, then your server. Yes, yes. Currently, we are hitting the API, that is nothing but the server side. Then it is connecting to our project. Currently, our project is local server, okay, and whatever the data is coming, that is coming from the database. Na, currently, we are storing in the SQL server, Yes, yes. or maybe we can store in. Suppose we are not using a database, then the another way is we can store in array. Okay, array. Otherwise,
No, in local there is no option because in if it is JavaScript, na, then we can store the in local. I think everyone has heard locally also we can store some data the Java using JavaScript language, Yes, right? sir. Yes. But here, till now, whatever the API we have tested, I think we are testing it as Swagger part, so that's why we have not getting the how many seconds it is executed. But if you tested in the Postman, na, then you are get to know in the below in the response part the time also mentioned 45 millisecond or 30 millisecond. Yes, ma'am. So for checking which API is running how many seconds and using Redis case, what is the reflection of the API in the speeding or executing in that way. Okay. For executing purpose, if you are using Redis case to that particular API, then what are the things is changed in the API after executing. And you can notice also for these things we are using I distributed case and another is distributed case. Two interfaces we have to take. We have to first of all declare in our controller section, and in this for using this Redis case concept, we can use get method only, get and set. Anywhere you can see not written anything like the insert, update, delete something. Get means what? We have already written some so many get methods, get APIs, get node, get user, get level. Yes, So any yes, of the get API, HTTP get API, to that API we will use the Redis cache and we will check what is the changing after using the Redis cache to the API. What is the changes is coming? Means how many seconds it's executing. And basically, I'm telling you in normal way. If you use Redis cache, na, previously it is by debugging, it is coming to controller to bl to rl, then if the user id is matched then it is returning something or printing the string message or boolean value whatever according to the logic whatever written. But currently if you use redis cache, then we will first of all create and declare one string. Okay, कैसे की करके ऐसे एक लेना है उसके in that we have to put the key, and that key you have to pass in the app setting.json also connect for connecting purpose. Then uh, by default it is not storing anything in the cache key. Remember this thing, not storing. First of all, if you run this that API na get node API, at that time it will be go into the else block. Else block it will it will be select first about the which key it is. If we are getting some response, suppose you are using get node. In the get node, suppose you have two nodes in the table. So two row records it will be printing, it will be display. Okay, that two rows will be stored in the that key, and that key is nothing but the temporary storage. That's why we are using Redis caching. And for that, so many you have to install this package and you have to run one server also. Okay, everything we follow, and then you have to execute this file. Then you have to on this. Then you have to use this port number in the startup this CS for the configuration purpose. Then coming to the in the app setting also you can see you have to use this Redis cache URL. Okay. Then next is scroll down. The next concept is scroll down. Scroll down, coming to the controller part. Yes, yes. So you can use in get node or get user anything, but you will use get node. Okay. In this, we have to like how you are declaring the I node BL in the controller. Same way, you have to declare two things. And scroll up now. So we have to declare that I distributed case in 21 number line. You can see I distributed case. You have to declare. You have to pass in the controller also for service lifetime dependency injection purpose. To set that, then coming to the get API, scroll down, get API also written here. In set also you can do, but we are using get. Okay, in this project, scroll down, scroll down. Yeah, I think this is the get, na? This is the get. Yeah. So in get all, I think you have already used get node. So another API you will from the interface you will use another method you have to create. If you want to use in the same get node or get user, then you have to
write one more method in the container, that is HTTP get root get node, and in the bracket you have to mention one. Uh, you have to pass one keyword or word that is separate, no, because already you have get node. So for that you can use Redis case get node. Okay, then you have to put the if condition. In the beginning, there will be no key existed in the temporary memory. Okay. Then for this, you have to use serialization, JSON serialization dot deserialize. Then for the you have to store it. If you are using list data type, then you can store in list. If you are using normal node, then you can store in that. Okay. So go to first file. We'll follow the step by step. Go to starting. You have to install something. Okay. Yes. Yes. So yeah, little bit scroll up. Yeah. You can download Windows version of Redis. ओके स्क्रॉल नीचे जाओ यार, एक डाउनलोड होगा ऑप्शन होगा. Yes. हाँ, वो लिंक को क्लिक करो. लिंक को क्लिक करने के बाद जीप फाइल को डाउनलोड करना है. इसको ये लिंक को चैट में डालो सो दैट एवरीवन कैन. नो नो जीप जीप को करना है. Yes. यूआरएल को कॉपी करो और सेंड करो चैट में. ओपन दिस यूआरएल एवरीवन, देन click the zip for downloading purpose. Redis is a server. Okay. Ma'am, Zip file. second one. Second Yeah, one. second one था ना या थर्ड वन था? No, ma'am, second one. सेकंड वन. ठीक. अभी उसको जाके एक्सट्रैक्ट करो. एक्सट्रैक्ट के बाद डॉट एक्स फाइल को रन करना है. Yes, ma'am. शो इन फोल्डर करो ना. अरे उसको शो इन फोल्डर करो. डाउनलोड फोल्डर या किसी में स्टोर है, पहले जाके देखो उसको. Yes. Yes, ma'am. अभी राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करो. Yes. राइट क्लिक या उसको डबल क्लिक करो. डॉट एक्सी कहाँ पर है? डॉट एक्सी एक्सपेंड करो ना. पेन को एक्सपेंड करो. Yes, ma'am. एक बार चेक करो तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन में. चेक करो कौन सा फाइल नेम है. डॉक्यूमेंटेशन यार, ब्राउजर में जाओ ना. Yeah. ब्राउजर में जाओ. फाइल जिप में तो ऑलरेडी कर चुके हो. जिप में क्यों फंसी जा रहा हो? हाँ, चल. अरे ये नहीं यार, डॉक्यूमेंटेशन में जाओ. कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? डॉक्यूमेंटेशन में जाओ ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कौन सा लिखा है? स्क्रॉल डाउन करो. डाउनलोड होने के बाद स्क्रॉल डाउन. रेडिस हाइपन CLI.exe इसको रन करना है. टू स्टार्ट द रेडिस सर्वर. जाके रन करो. जाओ मैनुअली कोड जाओ. रेडिस हाइपन CLI. फोल्डर में डबल क्लिक करो. हाँ उसको डबल क्लिक करो. ठीक है. अच्छा ये आ गया. एक सेकंड. कुड नॉट कनेक्ट टू बिकॉज टारगेट मैसेज एक्स. क्या हो? रन नहीं हुआ था क्या? Ma'am, कौन सा वाला कर रहे हो? एक सेकंड. क्लोज करो उसको. रेडिस CLI यही था ना और कुछ था? yes, ma'am. यही था.
फर्स्ट शायद यही से था। रेडिस सर्वर करना है। .exe नहीं आ रहा है तुम्हारा? नहीं मैम। नहीं वो एक सी नहीं आ रहा है, बट वो है एप्लीकेशन ही है, एक सी फाइल ही है। स्क्रॉल अप करो एक बार डॉक्यूमेंटेशन में। यस मैम, यही पे सिलेक्ट किया था इसको मैंने। रिपेयरमेंट हाँ किया था ना। किया है मैम। और किसका आ रहा है exe फाइल? हाँ मैम वो एक हाँ, सी फाइल ही है, बट वो लिख के नहीं आ रहा है, वो एक सी फाइल ही है। तो उसको रन करो ना। रन मतलब क्लिक करो उस पे। क्लिक करने में क्या आ रहा है? तो सेकंड फिर वाला, से करो। सेकंड वाला क्लिक करने पे आ रहा है वो, जो भी विंडो आउटपुट दिखाया है उस पे। अलाउ एक्सेस। यस अभी और एक जो है रेडिस CLA उसमें भी क्लिक करो। अरे रेडिस -CLA है ना हाँ उसमें वो चालू आया रख ये। रखते हुए करना है। मैम। यस मैम, यस मैम। क्या अरे ये नहीं, इतना कंफ्यूज क्यों? नर्वस हो रहे हो क्या? नो मैम। हैं? पिंग करना है यहाँ पे। इतना क्यों? लिखो, पिंग लिखो। अगर वो पोंग देगा देन तुम्हारा सर्वर मतलब अन है। एंटर। यस। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन फिर से जाओ। यस मैम। स्क्रॉल डाउन करो। यस मैम। तो तुम्हारा पोर्ट नंबर 6379 है, ठीक है। यस अभी तो ये हम लोग चेक कर लिए सर्वर ऑन है करके। हाँ, उसके बाद सेट करो। सेट कमांड है, ओके। सेट हाई स्पेस माई की, देन इसको एक की डालो। की तुम्हारा नाम डाल सकते हो, नहीं कुछ भी डाल सकते हो। इस की को हम लोग सेट करेंगे। ओके। गेट भी कर सकते हैं। गेट करने के लिए गेट माई की है। यस मैम। अभी गेट करो, गेट माई यस की। मैम। तो आ रहा है ना। हाँ, स्क्रॉल अभी नीचे जाओ, डॉक्यूमेंटेशन फिर से क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्या है? यस क्रिएट ASP.NET कोर्स 6.0 यूजिंग विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो। हाँ, स्क्रॉल डाउन करो। पूरा नहीं नहीं, डॉक्यूमेंटेशन नीचे जाओ, नीचे जाओ और एक पैकेज होगा उसको इंस्टॉल करना है। दिस उसको पैकेज। कॉपी करो पैकेज को, कैसिंग डॉट स्टाक एक्सचेंज रेडिस। न्यूगोड पैकेज में जाकर उसको कौन सा वर्जन लिखा है क्या? वर्ड। तो लेटेस्ट वर्जन ही करना है, ठीक है। जाओ ओके। कोड में जाओ। यस हम्म, मैम, ऑल प्रोजेक्ट फॉर कुछ। नहीं नहीं, ऑल नहीं। तुम्हारा फंडू में ही करो, क्योंकि कंट्रोलर में लिखना है। कंट्रोलर में रिलेटेड कुछ है तो फंडू नोट सिलेक्ट करना है। इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन क्या? कौन सा वर्जन है? वन वन? पॉइंट ओ। एक ही था क्या? यस मैम। ठीक है। चैट में भी सेंड। हम्म अभी नेक्स्ट क्या करना है? उसको कॉपी करो, 9 नंबर लाइन को। यस मैम। 9 नंबर लाइन। ओके ओके ओके। अभी तुम्हारा आप सेटिंग डॉट जेएसएन में जाओ। यस मैम, ये होने का है ना इसका। हाँ, होने के बाद यस। एक्सेप्ट करो। लेटेस्ट। वर्जन एक ही था कि थोड़ा ओपन करो ड्रॉप डाउन या। यस यस। एक ही था। क्या ठीक है? है, ठीक है।
भी आप सेटिंग में जाओ। हाँ, वो 11 नंबर के पहले एंटर करके पेस्ट करो। ओके 11 नंबर के पहले। अरे यस उसको बैक बैक तो बैक क्यों जाना है? 11 नंबर स्पेस डाल के बैक स्पेस डाल के कर सकते हो ना, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? फिर भी समझ में नहीं आया। मैं बोली जहाँ पर था कर्ली ब्रैकेट उसमें थोड़ा बैक स्पेस डाल के एंटर, हाँ यस वो भी कर सकते हो ना। यस इतना जाकर पूरा राइट में जाओगे करोगे, टाइम कितना वेस्ट होगा। पेस्ट करो। यस ठीक है, अभी तुम्हारा जहाँ पर ओपन हुआ है ना टर्मिनल, चेक करो तुम्हारा पोर्ट नंबर क्या है, सेम ही है क्या? और यस सर्वर सेम सर्वर रेडिस के सर्वर सेम यही ही था है। ना? यस सेम है यस ठीक मैम है। ओके ठीक है, अभी इसको ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या है? चेक करो डॉक्यूमेंटेशन में। तो काउंट लिख रहे हो पाल लाल काउंट करके, वो नहीं चाहिए, ठीक है, उसको जरूरत ओके नहीं है। लिख रहा है यस टोटल काउंट कितना करके। अभी नेक्स्ट क्या था? डाटाबेस कनेक्शन मॉडल। ओके, मॉडल क्रिएट हम लोग का तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, सब एपीआई भी रिटर्न हो चुका है। अभी रेडिस कैसे आपका ही करना है, पूरा लास्ट में जाओ, आई थिंक लास्ट में कोड होगा। हाँ, एक ऐसे स्टार्टअप में भी कुछ करना है, स्क्रॉल अप करो। यस रेडिस कैसे कुछ, हाँ है ना, स्टार्टअप में जाओ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। ओके रेडिस थोड़ा रुको ना, नीचे जाओ यार, स्टार्टअप में जाओ, स्टार्टअप में स्क्रॉल डाउन करो। स्टार्टअप नहीं है, स्क्रॉल डाउन हाँ करो, यही स्टार्ट, कौन सा था? नीचे वाला है थी। स्टार्टअप कहाँ पर? स्टार्टअप डॉट सी कुछ लिखा था ना कहाँ पर? यस मैम वही चेक करती हूँ प्रोग्राम करेंगे सर नीचे प्रोग्राम डॉट सी जहाँ पर लिखा है उसमें जाओ। यस यस वेट 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 करो, वो लाइन को कॉपी करो। बिल्डर डॉट सर्विसेज ओके 15 यस मैम हमारा ये जाओ डाटा में जाकर पेस्ट करो। बिल्डर मत करना, सर्विसेज ही करना। ओके स्टार्ट और मैम कहाँ पे पुट करना है? अच्छा सर डाल दिए? यस मैम कौन सा डाल, क्या क्या लिखे? उसको ओवर करो। यस मैम नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? नहीं एक सेकंड, उसको डिलीट कर दो यार। आई एम सेंडिंग इन चैट, उसको अदरवाइज लिखो, लिखो सर्विसेज डॉट, लिखो सर्विसेज डॉट एड मेमोरी कैसे लिखो। ओके हम्म, सबको हटा दो। ओनली सर्विसेज डॉट एड मेमोरी कैसे, CACHE, बाकी उसके बाद हटा दो सबको। अभी उसको ओवर करो। मैम आई हैव टू गो, मेरा पेपर स्टार्ट हो गया। ठीक है ठीक है, you can go. ओके ओके। नहीं मैम 1 second, एड मेमोरी कैसे इंस्टॉल किया ना उसको, स्टॉक एक्सचेंज को। यस मैम क्लीन ये तो फिर भी क्यों नहीं आ रहा है? इंस्टॉल करना कौन सा वाला इंस्टॉल किया मुझे दिखो एक बार। दिस वन फाइल, मैम यस दिस वन मैम हाँ इसको किए हो, कैसे आएगा? हाँ, ये लिखा था क्या डॉक्यूमेंटेशन? फिर से रीड करो। 1 सेकंड माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सटेंशन कैसिंग करना था ना। हम्म
नहीं ये नहीं, I'm ये sending in chat, उसको कॉपी करो। मैम ये वाला था वो अरे वो इसलिए। लिखा है उसको ऊपर थोड़ा पढ़ो, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सटेंशन ये है पैकेज का नाम। यस हाँ और अनइंस्टॉल का 6 इसलिए मैं पूछ रही थी वर्जन 1 कैसे आ गया। उसको अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल करो, वो उसको 6 वर्जन ये करो। यस हम 6.0 6.0 पर। पर उसको इंस्टॉल करो। ये अभी जो उसको उसमें कोड था उसको कॉपी करो, हम्म सर्विसेज डॉट एड मेमोरी कैसे उसको भी इंपोर्ट करो, और एक भी लाइन था ना उसको भी पेस्ट हम्म कर दो। सर्विसेज है स्मॉल है, थोड़ा तो दिमाग डालो अपना। 37 लाइन में ऑब्जेक्ट तुम्हारा सर्विसेज। जाओ डॉक्यूमेंटेशन में, हाँ वो जो काम पर था प्रोग्राम डॉट सी एस में उसको कॉपी करो पहले। यस यस हाँ उसको सर्विसेज से लेकर एड स्टॉक एक्सचेंज रेडीज वो उसको नीचे नीचे वाले को यार। ओके ओके। हम्म, पेस्ट करो जाके कोड में। हाँ एंटर पेस्ट। इसको स्मॉल करो, कॉन्फ़िगरेशन को चेक करो क्या आ रहा है। हमने जनरेट कर ऑप्शन डॉट कॉन्फ़िगरेशन इसमें यही था क्या और कुछ था। ये था मैम। ऑप्शन डॉट कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू राइट ये करो, था स्क्रॉल टू राइट करो, ये कैपिटल है आई थिंक। मैम। अच्छा ओके कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो क्या ओवर करने के बाद क्या दिखा रहा है। Ma'am, that field generated and all that. डज नॉट एग्जिस्ट इन द कंस्ट्रक्टर। एक काम करो, आई Hmm. थिंक ये आई कॉन्फ़िगरेशन का ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये हो जाएगा आई थिंक। एंड वो तुम्हारा आप सेटिंग में जो की था ये रेडिस कैसे यूआरएल ही है ना। Yes, ma'am. 1 सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन को ऑप्शन डॉट कॉन्फ़िगरेशन वो इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन को हटा दो यार। Right. नहीं 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 पूरा नहीं इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन इतना ही हटाओ। हाँ हम ब्रैकेट रेडिट स्लैश यूआरएल के बाद दो कोटेशन लगा के वो डालना है क्या तीन जो यूआरएल डाला था। कॉन्फ़िगरेशन के बाद ब्रैकेट डालो, ओपन ब्रैकेट हाँ कॉन्फ़िगरेशन के बाद, कॉन्फ़िगरेशन के बाद बाद अरे बाद उसके बाद डालो ना। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर एंड हो रहा है पायल। कॉन्फ़िगरेशन आर ए टी आई और उसके बाद ब्रैकेट डालो ना, ओपन ब्रैकेट। हाँ क्लोज ब्रैकेट जहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट एंड हो रहा है उसके बाद एंड करो। एंड वो सेमीकोलन खाली सेमीकोलन को हटाओ। कॉन्फ़िगरेशन को होवर करो, हम चेंज कॉन्फ़िगरेशन टू कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन। ठीक है काम करो उसको कमेंट कर दो यार, 42 को कमेंट करो। ऊपर वाले को लिखोगे तभी भी वो काम करेगा ऐड मेमोरी कैसे को। ठीक है अभी नेक्स्ट हमारा क्या करना है। हाँ आप सेटिंग तो हो गया। एंड अभी सी सी स्टार्टअप में ही जाओ,
स्टार्टअप में एक मेथड है ना, जहाँ पे आप डॉट लिख रहे हैं, उसमें उसमें लास्ट में जाकर ये लिखो, Yes, ma'am. एक सेकेंड, हाँ यूज HTTP डिटेक्शन है, अच्छा ओके। आई एम सेंडिंग इन चैट, उसको कॉपी करो Yes, ma'am. एंड जहाँ पर ऐड मेमोरी कैसे लिखे था ना, उसके बाद उसको पेस्ट करो। Okay. क्योंकि जैसे डॉक्यूमेंटेशन तुम लोग क्रिएट किया उसमें लिखा था ऐड डिस्ट्रीब्यूटेड रेडिस कैसे है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब मल्टीपल सर्वर भी वो कनेक्ट हो सकता है। मेमोरी कैसे मतलब मेमोरी को ऐड करने के लिए ऐड मेमोरी वो मेथड है, इनबिल्ट मेथड, एंड उसको इंपोर्ट करो। एंड लोकल होस्ट तुम्हारा 6379 है, तो इसलिए वो है। Ma'am, क्या हो रहा, नहीं आ रहा है? नहीं. तो बोल करो यार, फिर से तो आएगा। अभी किया ना स्टॉक एक्सचेंज का, Ma'am, no. नहीं आ रहा है? Mhm. Okay. See. सी सी। Yes. पायल, Yes, ma'am. मैं तुमको कॉपी करने के लिए बोली, तुम कॉपी भी कर दिए। तुम क्या कॉपी किए? वो मेरा वो कॉन्फ़िगरेशन सर्विस का वो कैलिब्रेटेड था, उसका हटाओ, Yes, ma'am. इसलिए नीचे वाला भी error, अभी ओवर करो। एक काम करो, उसको कट करो, नहीं तो नीचे डालो, नीचे डालो, पूरा का कट करो, 43 से लेकर 48 तक। हाँ हाँ, कट करो, स्क्रॉल डाउन करो। Mhm. हाँ, वो तुम्हारा वेट वेट वेट, Yeah. 96 के बाद एंटर करो, टेस्ट करो। सर्विसेज क्या दिखा रहा है, इशू क्या आ रहा है, पढ़ो ना उसको। iService collection does not contain a definition for a distributed Redis cache and no accessible extension method. At distributed Redis cache, accepting the first argument of a type iService collection could be found. Directive missing references. ओके, कुछ नहीं, उसको नहीं हो गया था. वो आई सर्विस कलेक्शन है ना तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन का, ये भी नहीं आ रहा है। कोड डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, Yes. स्क्रॉल डाउन करो, नीचे जाओ, स्क्रॉल डाउन। तो इसको इंपोर्ट करने के बाद तुम लोग, यू कैन सी द डिफरेंस यार। गेट मेथड यूज करोगे तो तुम्हारा ये 8 मिली सेकेंड में रन हो रहा है। एंड क्या हो रहा है, रेडिस कैसे है उसमें स्टोर होगा, उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट तुम्हारा ये ठीक है, एक काम करो, वो जो स्टार्टअप में जो लिखे हो तो कमेंट कर दो, Yes. ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी जितना भी तुम लिखे हो एक बार बिल्ड करो सॉल्यूशन को, देखो कुछ एरर नहीं है तो। うん。 Yes. 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 うん。 Yes
नहीं है ना? नहीं। ओके, ये सबको तुम गिटहब में अपलोड कर चुके हो जितना तक तुम्हारा कोड था? No, ma'am, actually that deletable remains, so that's why I couldn't use. एक सेकंड पायल, अगर तुम इंस्टॉल किए हो ना पैकेज, वो तो मतलब वो इंपोर्ट हो जाता है। एक बार मुझे फिर से दिखाओ यार, कहाँ पर तुम इंस्टॉल किए हो पैकेज को? Yes, ma'am, Fundo notes. विंडो नोट्स। Now at this point, okay, we are going to it will install now. और एक भी है, ठीक है। Hmm. न्यूगेट पैकेज में जाओ, लिखो माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सटेंशन डॉट कैसिंग डॉट रेडिस, उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। Dot. एक्सटेंशन डॉट कैसिंग, Okay. कैसिंग CACHING डॉट रेडिस। Next one. It's in some Microsoft Entity Framework. रुको रुको, मैं सेंड कर रही हूँ चैट में। Okay. एंड अभी जो तुम किए उसका स्टॉक एक्सचेंज है ना, का नेम One second. इंस्टॉल में चेक करो, I'm not sure. अपडेट में। Okay. No. इसमें भी नहीं आ रहा है तो डबल क्लिक करो ना, सिस्टम स्टॉक हो गया है। फंडू नोट में डबल क्लिक करो, Yeah. फंडू नोट में पायल Okay. 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 डबल क्लिक कर दो ना, पता चल जाएगा। Fundo notes. हाँ, फंडू नोट फोल्डर के अंदर Okay. डबल क्लिक करने से पता चलेगा ना। Yes. ये Yes. Yes. PROG। Yeah. तो कौन सा है, तुम कौन सा ये किए हो? स्टॉक एक्सचेंज, एक्सटेंशन और केसिंग स्टॉक एक्सचेंज दैट इज ओके। और जो मैं सेंड की हूँ चैट में, उसको कॉपी करके इंस्टॉल Yes. करो। 2.2.0 वर्जन है, ठीक है। Others following to me or not, or only just observing? Following me. Guys, following na? Yes, ma'am. Everyone understood whatever till now doing or not understood? I could not First get one. anything. I mean, we are not anyone not asking anything. Yeah, no one is asking anything, any doubt. I think everyone is understood. Everyone is very smart. I'm Okay. 2.2. हाँ 2 पर, हाँ उसको ही करो, फंडो नोट में करो। Yes. Yes, I'm done. डन। अभी उसमें जाके होवर करो, इसको लिख रहे थे Yes. स्टार्टअप में। हाँ लिख रहे थे। Yes. हाँ उसको ऑन कमेंट करो। Yes. I'm okay. Done. हो गया। Yes. अभी नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन में जाओ यार। Yeah. Yes. Follow. हाँ, फिर नेक्स्ट क्या है? Create a good touch. Okay. ओके, नहीं नहीं ये नहीं यार, डॉक्यूमेंटेशन में क्या था और चेक करो। Add migration. एड माइग्रेशन वो कर रहा है, इसलिए वो हम लोग ऑलरेडी मॉडल क्लास क्रिएट कर चुके Okay. हैं ना। Okay. Okay. Yes. तो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? कंट्रोलर में एपीआई लिखना है। तो हम लोग यूज करेंगे गेट नोड को, ठीक है। गेट नोड को इसमें
अभी तुम्हारा स्टार्टअप में भी ऐड हो गया, आप सेटिंग में भी ऐड हो गया, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज वी हैव टू राइट द कोड इन get node API in the control section. Okay, so go to your node controller file. Yes, ma'am. Hmm. Get uh, have you written the API get node or get all nodes anything? What, ma'am? Have you written the API get node or not? I'm asking. No, no. Gate. Yes, ma'am. Gate note. Go there. Go to top. Scroll up to the top. Okay, and here you have to initialize two things. I'm sending in chat because you have already added two methods in the startup, that is memory cache and I distribute cache. Yes. Same thing you have to first of all declare here and create an object. That means initial instance you have to create and you have to pass in the constructor. Same way how you have created inode.bl, same way what I send in the chart, just copy that, paste after 19 number line, then pass in the constructor. The next thing you have to use in the controller part. Okay, so import करो. कंस्ट्रक्टर अंदर पास करो. Yes. ऑलरेडी लिखा है पायल. अच्छा, okay, okay. Hmm. इसको कॉपी कर दो ना, कॉपी कर दो आई मेमोरी कैसे और एक आई डिस्ट्रीब्यूटर, देन सेट करो वेरिएबल को. Done, ma'am. Done. Okay, then just go to the last page. Yes, ma'am. What is your get all now? This one na. Yes, ma'am. Enter after 230. Hmm. 230. 230 कौन सा है अश्विन? Hurry. अश्विन, Yes, ma'am. where is 230 number line? Is that after catch? Tell her. Uh, थ्रो के बाद after that, I Oh, 230. 230. Okay, okay. what to sir? Nothing. She Okay. was thinking 213 instead of 23. 230. Now Sorry, ma'am. 230 that means तो अभी एपीआई लिखो, उसके बाद और एक बनाना है तो उसको जो कर्ली ब्रैकेट एंड हो रहा है उसके बाद डालो, पेस्ट करो कोड. Which code, ma'am? पायल कर्ली ब्रैकेट के ऊपर लिखना है, थ्रो में. हाँ, थ्रो में लिखना है. Okay, okay. From you.
Um, मैम क्या लिखना है? ओके वॉइस मैम वॉइस Yeah, copy that code. And because you have already written get all node, that's why you will change the uh, URL name, that is get all nodes redis. Okay. But same you have to use. How you are using get this dot bl dot something, same thing you have to use, but only code. थोड़ा तो कॉमन सेंस डालो यार, केस ब्लॉक के अंदर कैसे डाल रहे हो यार उसको? नो मैम फिर से केस ब्लॉक के बाद तुम्हारा एंड कहाँ पर होगा? एंड कोई क्यों नहीं बोल रहे बाकी सब? एक एपीआई एक दूसरा फंक्शन है ये, तो उसको अंदर डालोगे, कैश ब्लॉक के अंदर कैसे डाल रहे हो यार? सॉरी मैम, वो मैंने बोला, मुझे लगा नहीं कैश ब्लॉक के अंदर कैसे डालोगे? 230 मतलब मुझे लगा 230 में तुम्हारा एंड हो रहा है, 231 में एंड हो रहा है। यस ओके, तो बाकी का कोड, वेट, all the code is not sending at a time in the chat. So next I will explain this code. Okay, just try it right now. Then next is up to what I send, node deserialize object, deserialize object. मैम, आफ्टर ऑल लेवल कंप्लीटेड देन वी हैव टू पुश इट ना, और After that only you have to create one more branch, that is redis कैसे UC, whatever the UC, यस and then you have to push. One second, the remaining code I am sending, copy and paste it. I will explain in the doubt session or maybe tomorrow. Okay, tomorrow in the doubt session. Time is already there. But before that, just gone through the concept, gone through the documentation so that you will understood the thing. Okay. And apart from the, if you are facing any issue, don't install anything here. Okay. If you install anything, then that will be maybe conflict comes. So understood the thing. Now, where is the red line is showing? Just hover on that and import. यस मैम क्या लिखे हुए हो पायल? गेट ऑल नोट्स बाय अंडरस्कोर, वो क्या है सर? रेड लाइन क्यों दिखा रहा है? आपने जो सेंड किया वही मैंने वही क्या? हाँ नॉट ऑल कोड पास रिटर्न ए वैल्यू, उसको हवर करो यार। नहीं हो रहा है नहीं वो नहीं यार, नीचे जो दिख रहा है एनकोडिंग, हाँ The name encoding does not exist in current context. एग्जिस्ट, तो ऊपर से दिख रहा है, क्लिक करो। Yes, yes. मैम जेसन पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। वेट जेसन पैकेज के निगोड पैकेज मैनेजर में जाओ एंड और नीचे भी दिखा रहा था प्रीव्यू करके, उसको भी तुम कर सकते हो, डायरेक्टली वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, कौन सा दिखा रहा था पैकेज, ओवर करो उसके ऊपर। नहीं वो कोड में जाओ, Yes, yes. Is the code complete? ओवर करो उसके ऊपर, सो पोटेंशियल फिक्स। हाँ, इंस्टॉल पैकेज का दिखा रहा है, हाँ उसको, वो जो ग्रीन कलर जहाँ पर है ना उसके ऊपर क्लिक करो, प्रीव्यू चेंजेस, हाँ Okay. वो ऐड हो जाएगा। हाँ ठीक है, अप्लाई। ठीक है, एंड वो गेट नोट Yes. सी, क्योंकि ये मैं जो भेजी हूँ ना वो मेथड का नाम है, बट तुम्हारा और कुछ मेथड है। नोट बीएल क्या मेथड था तुम्हारा? गेट ऑल नोड लिखी हो, एपीआई मेथड लिखी हो?
गेट हाँ तो ऑल उसको हटा के डॉट के बाद लिखो, देखो ना यस सजेस्ट कर रहा होगा यस वो। यस वो मेथड अलग है पायल। एपीआई में जो लिखते हैं, कंट्रोलर में जो मेथड लिखते हैं वो कस्टम होता है, बट बीएल यस में जो आ रहा है जो ऑलरेडी तुम क्रिएट कर चुके होगे, क्या आ रहा है, कौन सा आ रहा है, यस गेट नोट है ना, हाँ, तो उसको लिखो। की में क्या है, की में एरर क्यों दिखा रहा है, इसको चेंज कर दो ना मैम, इतना क्या इश्यू है, गेट ऑल नोट को चेंज कर दो। ऊपर जो 3239 में यस दिखा रहा है रेड कर रही लाइन, कर रही हूँ, कर हाँ इसमें की, तुम रिटर्न रजिस्टर्ड होके लिखियो, स्क्रॉल डाउन करो, रिटर्न नहीं मिल रहा है उसको, इसलिए वो एरर दिखा रहा है। कहाँ तुम लिखी हो यार, कहाँ रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ है तुम्हारा, मैं हम तो पूरा जितना कोड सेंड की हूँ ना। हम हम जितना था उतना कॉपी किया मैंने। पूरा कोड नहीं सेंड हुआ है, तो नहीं कहाँ नहीं, गया, फ्रॉम फ्रॉम आवर 6 तक ही फिर सेंड से हुआ। नहीं जा रहा है, इतना करने के बाद तो चार्ट में भी नहीं जा रहा है। कितना तक मैं सेंड किया हूँ, टाइम फ्रॉम स्टैम्प आवर फ्रॉम 6 years टाइम स्पैन इसमें। 1 second, ठीक है इसको पेस्ट करो, इसलिए वो एरर आया था, रिटर्न स्टेटमेंट उसको नहीं मिल रहा था। कॉपी करो, पेस्ट करो। हम्म। देखो ब्रैकेट देखो, 2 3 आई थिंक तुम डाल दियो एक्स्ट्रा। यस 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 अभी उसमें गेट नोट है क्या वो, यस और गेट नोट एरर दिखा रहा है, चेक करो यार क्या है। अभी तुम गेट नोट में कुछ पास कर रही होती, कुछ पास कर रही हो गेट नोट में, कुछ पैरामीटर है, इसलिए वो एरर दिखा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को, और एक एपीआई मेथड लिखना पड़ेगा आई नोट आरएल में, गेट नोट करके, गेट नोट रेडिस करके, उसके अंदर कुछ पास नहीं करना है, ठीक है। अदरवाइज आई विल टेल इन द डाउट सेशन, ओके, बिकॉज आई हैव अनदर सेशन, ठीक है। अभी इसको कमेंट करके बाकी जितना रिमेनिंग कोड है उसको करो, अगर ये इशू आ रहा है तो। जितना अभी इंस्टॉल वगैरह सर्वर इशू वो सब हो चुका है, ओनली कोड में चेक करना है, बट इफ आई एक्सप्लेनिंग राइट नाउ ना इट विल टेक मोर देन हाफ एन आवर, सो आई कुड नॉट do that right now, okay, and the link just send in the chat so that everyone can follow also who have completed that level part, okay, and I will join the doubt session, I will tell about this registration part, this is not and very important, if you once do it then you will understand the thing, okay. Fine guys, thank you so much, okay. Who is absent today or everyone is present? अक्षता, अंकिता, अश्विन, गणेश, नेम तो याद नहीं है मुझे सबका। एक दो साल विशाल, विशाल और कोई ऑप्शन है टुडे, गणेश Ankit was सब present, but प्रेजेंट है। he left. हाँ अंकित पता है, बट और किसका, और कोई ऑप्शन है टुडे सागर को छोड़कर, नो मैम। नहीं मैं और कोई सब प्रेजेंट है ना, ठीक है ठीक सब है, है। ओके ठीक है, करो यार, जिसका लेवल बाकी है उसको कंप्लीट करो, उसको रजिस्ट्रेशन में देखते हैं बाद में, ठीक है। तो थैंक यू मैम। थैंक यू। गया भाई, लेबल मध्ये प्रॉब्लेम होता, लेबलचं नाव वेगळे होते माझ्या ह्याच्यात. झाला. आता करू ना बाकी.
गेट ऑल. अबे आपल्या आता गेट नोट नाही केलंय बहुतेक, आपण गेट ऑल नोट केलंय. चालते ना, म्हणजे कोणत्या याच्यात चालते विषय नाही. ठीक आहे. बघू ना किती वेळ लागेल रे, किती वेळ लागेल बाकीचा कोडला. अरे ते जाऊ दे, पहिले त्या गिटहबवर अपडेट करायचा पाय भावा.